A lot of times we all take players for granted, sporting teams for granted. हम सब भूल जाते हैं. At the end of the day, they are human beings. A lot goes behind the scenes. बहुत सारा चीज होता है in their lives as well. And yes, you have to say that आप expect करोगे कि आप balance करो personal and professional life. लेकिन I knew there is something more to it. Thomas Tuchel wasn't his normal self against Brentford और वो दिख रहा था, वो पता लग रहा था और I just have total sympathy for Thomas Tuchel. ये पता लगने के बाद कि क्या है प्रॉब्लम पॉसिबली अपार्ट फ्रॉम जो भी हो रहा है चेल्सी फुटबॉल क्लब में. और यस, बने रहना लास्ट तक क्योंकि यस एब्सोल्युटली आप भी अग्री करोगे. That's what I feel. आप कमेंट करना what do you feel about it. It's not just Chelsea. We'll be discussing Champions League week है. So we'll be discussing our opponent Real Madrid कैसे की है इस वीकेंड में. ऑफ कोर्स एक सैटरडे राउंड अप होगा with other teams as well. Liverpool were there, Man City were there and Bayern Munich, Atletico Madrid भी. ये सब टीम्स भिड़ने वाली है एक दूसरे से, नहीं तो they are at least playing in Champions League, right? तो बहुत important weekend for them I would say. Starting off लेकिन हमें कहाँ से शुरू करना है भाई? Definitely it has to be Chelsea Brentford and वो starting 11. I have to put a question. Yes, 4 at the back. मैं खुद बोलता हूँ यार बहुत बार. Chelsea needs to go 4 at the back eventually. There has to be some point. और प्रीमियर लीग में ही मैंने बोला है कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए. That is what we need to do. Third place almost kind of secured है. Max what 4th होंगे. Come on, उसके नीचे नहीं जाने वाले. That's what I personally feel. But again, I might be wrong. और इस गेम को देखने के बाद आप बोलोगे हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ क्योंकि yes 4 at the back तो ठीक है लेकिन पर्सनल क्या खेला है. We didn't go with Kovacic. We didn't go with Jorginho. हाँ, Jorginho may not play against the Brentford, वो physical side, लेकिन that's why Loftus-Cheek played. But Kovacic did not play. Kante played. Kante wasn't himself. लेकिन left back, Alonso, भाई, Pablo Escobar, you are very good in 3 at the back, you know. But Tuchel, why play Alonso 4 at the back में? Why play him? You have Malang Sarr जो अच्छा किए थे against Brentford early on the season. So why not use him? More physicality as well. मुझे समझ में नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. अपफ्रंट आई नो ऑप्शंस नहीं थे तो टीमो वर्नर, फ्रॉड वर्नर, मैं खुद ही बोल रहा हूँ. यस, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ही हैज प्रूव्ड मी राइट. ये गेम में कुछ किया नहीं वर्नर ने. इट इज क्लियरली दैट वर्नर खेल रहा था जस्ट बिकॉज हडसन-ओडोई वाजंट अवेलेबल. यस, ही इज नॉट बेटर एनीवे एंड ऑफ कोर्स यू नो वी डिडंट हैव क्रिस्टियन पुलिसिक भी. दैट इज व्हाई वो खेल रहा था. लुकाकू वाज इन द बेंच. दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड. Aspilicueta right back, Reece James not being starting. So I don't know. ये backfired clearly first half में लग रहा था. But before anything, hats off or big thumbs up to Chelsea perspective. My friend Coachella, he has covered a lot of content lately. लेकिन importantly, NoToRicketts Protest we did cover. हाँ, we are strong advocates उसके लिए on Almighty Blues FC as well. लेकिन he covered and big up to Nick Blue. Nick Blue was featured on The Guardian and not about just getting featured. Nick Blue ने actually मुझे goosebumps दिलाए because of the fact that we saw how the Chelsea fans got together outside the stadium before the match. वो protest के लिए NoToRicketts. I know things haven't gotten better last 48 hours में, लेकिन ये सब चीज maybe will be a good voice in a silent way. No violence, silent protest, लेकिन much needed. बहुत ही अच्छा protest, अच्छा लगा. लेकिन मूविंग ऑन टू द गेम, फर्स्ट हाफ में ड्रॉस एटमोस्फियर. थॉमस टुकल आल्सो अग्रीड कि व्हाट वाज दैट एटमोस्फियर अबाउट. आई डोंट नो क्या हुआ था. साफ सुन लिया क्या सब लोग ने? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ऐसा एटमोस्फियर नहीं चाहिए भाई रियल मैड्रिड के साथ. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन परफॉर्मेंस भी, प्लेयर्स एंड यस गेटिंग टू थॉमस टुकल एंड यस प्लेयर्स शुड बी बैकिंग टुकल बाय द परफॉर्मेंसेस. अभी मोर देन एवर उनको पता होगा ये Thomas Tuchel has been going through hell last एक हफ्ते में possibly. Or of course the news that you have been waiting for is the fact that yes, it has been a 13-year long association. Thomas Tuchel is splitting up. Whatever be the reason, ये tough time है and it is a really tough time. आप बोलोगे you have to keep personal professional life different, but come on, I totally relate and sympathize to him. Absolutely, it's like something that you cannot help it, but it will be there subconsciously in your mind. और बहुत स्ट्रेस है. Along with that, Chelsea का जो हो रहा है, board problems and what not, as in we had so many injuries, वो अलग last few months में. I don't know यार, Thomas Tuchel hats off, respect, लेकिन it was showing on the pitch because एक तो changes नहीं थे टाइम पर. और वो मैं आऊंगा उस पर. First good point, a great point was that Rudiger was one of them. By the first half में towards the last 10 minutes we were quite good. हमने chances create करना शुरू कर दिया था. Second half के first 10 minutes में भी we were quite okay. Similarly, और Rudiger was a person जिसने किया breakthrough
Brilliant. Finally, Rudiger and his runs comes to fruition. Proper legendary of a goal, reminded me SCN ka goal almost. Remember against Arsenal all those years ago? Rudiger. और by the way, I was celebrating like crazy. लेकिन celebrate करी ही नहीं उसके पहले ही यार Chelsea conceded. ठीक है, celebrate तो करने दो भाई, ऐसा गोल. What a shot from so far, hitting the post, hitting the second post inside, लेकिन नहीं. चेल्सी ने हक दिया क्योंकि रूडिगर के साइड ही, रूडिगर एंड अलोंसो के साइड लेफ्ट साइड एक सेट पीस था चेल्सी का भी. गेव द बॉल अवे, ले लो भाई, ले लो ब्रेंटफोर्ड. इट वाज ऑन अ थाली प्लेट में सजा हुआ एंड ब्रेंटफोर्ड टुक इट एंड दे स्कोर्ड. और उतना ही नहीं, आफ्टर दैट अगेन 3 और मिनट में वापस से एक और गोल. और तब क्लियरली वी वर सक्ड इन. हमारा मिडफील्ड वाज काइंड ऑफ मिसिंग. आई फेल्ट वी वर काइंड ऑफ ट्रांजिशन में lost in transition, that's what I would say. Or right back Azpilicueta and Thiago Silva totally sucked in. और कहाँ थी हमारी सेंट्रल डिफेंस, कहाँ थी हमारी सेंट्रल मिडफील्ड? They were not there प्रोटेक्ट करने के लिए मेंडी को. और उतना ही नहीं भाई, अलोंसो क्यों था राइट साइड में one of the goals? I don't even remember इतने सारे गोल्स हुए. Yes, it was 4-1 Chelsea lost to Brentford and one of the goals again Ziyech. You are not expected to defend all the time. लेकिन भाई आप इतना इजी से बॉल नहीं आप लूज कर सकते हो. कांटे wasn't his normal self. He also missed his tackle. It was मतलब एक जन को नहीं ब्लेम करो. Literally everyone, even Mendy. The third goal was kind of आप बोलोगे हाँ easily beaten हमारी right side of defense again. But it was Mendy जिसने I think he got a touch but not strong enough the palm. Or between second and the third goal, finally Reece James came on. लेकिन why did he come on the left hand side replacing Alonso? वो एक सब्स्टिट्यूशन था which kind of screwed up for the entire match. हम फिर अटैक कर ही नहीं पाए लेफ्ट साइड से. अलोंसो वाज द मेन अटैकर. as much as वो डिफेंसिवली इतना लायबल है, लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अटैक ही इज रिक्वायर्ड क्योंकि पुलिसिक नहीं था भाई. वर्नर तो मिसिंग है. वर्नर तो फुटबॉलर नहीं है भाई. वर्नर फुटबॉलर नहीं है. उसका टच आप देखे, हम सब देखे. he was just a body on the pitch, was trying to kind of defend. हाँ ट्रायर है, चलो I'll give him that, but that's all. और कुछ कर नहीं रहा था. लेफ्ट साइड में हाउ कैन यू हैव रीस जेम्स? ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द लीग. अगेन मैं मतलब रैंक पे जा रहा हूं बट इट्स प्योरली फ्रॉम फुटबॉलिंग सेंस. अगेन कमिंग टू थॉमस टुकल, आई टोटली एग्री. ही हैज बीन थ्रू हेल बीट एट चेल्सी बिकॉज़ ऑफ प्रॉब्लम्स रिसेंट एक महीने में, लेकिन मोर सो रिसेंट हफ्ते में पर्सनल इश्यूज. लाइक आई जस्ट विश हिम द बेस्ट. और ये कैन बी अ रूड अवेकनिंग फॉर अस बिफोर रियल मैड्रिड. और टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, before that even, hats off to Christian Eriksen भाई. Christian Eriksen, what a performance. Man of the match आप बोलोगे, comment करिए नीचे. But Real Madrid, I don't know यार, La Liga में again congratulations first of all Real Madrid to win against Celta Vigo away 2-1. बहुत अच्छा victory for them on paper. But did Celta Vigo did not deserve a point at least? Were those penalties? 3 penalties मिले. Yes, 3 penalties Real Madrid got, and Karim Benzema, he becomes what? I think his highest ever Real Madrid tally of goals for a season. Brilliant. लेकिन in this particular game 2 तो penalties और third penalty missed it. और तीनों ही penalties debatable थे. तीनों ही penalties debatable थे for me. One was certainly Ferland Mendy. Again, I know La Liga है and Real Madrid overall maybe you can say deserve करती है, but what was that? Ferland Mendy literally touch होते ही गिर गए भाई left side में. And opposition fans and especially Celta Vigo fans and players will probably agree that the referees, this is what they are in La Liga right now. That is what their take is. Again, Real Madrid fans, don't get offended. The fact being that, I think Celta Vigo player Aspas, he also said, I think referee really they wanted Benzema to get a hat-trick. That is what they probably wanted, right? But again, वो तो is just kind of tongue in cheek बोलने के लिए. लेकिन having said that, it is about, I don't know, Real Madrid getting that result at the end of the day. They have won it. उनकी गलती नहीं है अगर मिलते हैं penalties उनके लिए. But yeah, I was little surprised कि Real Madrid started with a proper lineup. Chelsea ने actually काफी rotate किया, more about experimentation. आप बोलोगे Tuchel or maybe resting players before Real Madrid game जो midweek में है at Stamford Bridge. But I think Real Madrid played with, I think probably arguably the top 11 that they would play against Chelsea. So that was interesting. They were kind of practicing for the game already. In a positive sense that कोई injure नहीं होगा. Comment करिए. I think Real Madrid took a risk. Was it worth it? Before even that, I think Militao got a second penalty, right? भाई क्या था वो? Was it really a penalty? Touch भी क्या था player?
अगेन आप बोलोगे डिबेटेबल है, अगर पेनल्टीज दिए हैं वीआर विल नॉट चेंज इट, सिमिलरली पेनल्टीज नहीं देते फिर भी सेम है, लेकिन पेनल्टीज अगर नहीं देते दैट इज व्हाट वुड हैव बीन द राइट डिसीजन फॉर मी। वो मैं ओल्ड स्कूल हूं, थोड़ा सा टच करते चूई में गिर मत जाओ भाई। एंड द थर्ड वन वाज आफ्टर अ चेंज रोड्रिगो केम ऑन एंड ही वाज सिमिलरली मिरर इमेज ऑफ फर्लैंड मेंडी, वो भी गिर गए एंड पेनल्टी। I don't know. What again? Congratulations, Real Madrid. Nothing against you, but I'm just saying, like, there was a certain amount of luck. Lekin, I think talking about La Liga, I think one team which is also doing well of late La Liga में is Atletico Madrid. Atletico Madrid now third over La Liga में, लेकिन Barcelona आज खेल रही जो 2 मैचेस है हैंड में, तो too soon to call. But getting a 4-1 victory for Atletico Madrid, that was something I think much needed उनके लिए. लेकिन they are playing Man City in midweek, so it will be interesting how Atletico Madrid comes up after that big victory. पर आप बोलोगे Atletico Madrid deserves all the plaudits क्योंकि हाँ 4-1 victory, हाँ Deportivo Alaves के साथ ही था, but Joao Felix, what a performance यार, 2 goals, और वही नहीं, लुइस सुआरेज 2 goals भी, brilliant. I don't know, वो Man City के साथ खेलने वाली midweek में they are just getting ready at the right time. आप बोलोगे they are coming in the form literally, हाँ. I don't know, Atletico Madrid against Man City, what do you think? Difference maker hoga this performance? ये momentum ले जाएंगे? Of course, by the way, before the game, I think Simeone's dad passed away and they gave him a tribute. So, kudos उनके लिए, लेकिन हाँ, sad moment for Simeone for sure. लेकिन talking about their opponent Man City खेली थी after Liverpool played. तो let's cover Liverpool का game. Liverpool जो 1 point behind थी Man City के, they went in against Watford. अर्ली किक ऑफ था और भाई क्या परफॉर्मेंस, बहुत ही तगड़ा ग्राइंडिंग आउट वाला परफॉर्मेंस, और दैट इज व्हाट लिवरपूल करते आ रही है। आई थिंक व्हाट एट होम 10 कंटिन्यूअस विंस। टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस विंस, आई थिंक चेल्सी का आई नो इतनी निंदा की थी, आई हैव टू क्विकली मेंशन दैट दिस इज द फर्स्ट गेम वी लॉस्ट एट होम सिंस जनवरी, तो फेयर इनफ। लेकिन हाँ, लिवरपूल, डियोगो जोटा एंड फेबिनियो वो करे गोल्स, ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर लिवरपूल और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, बिकॉज हाँ यर्गन क्लॉप, he has been there in the Premier League for quite a while, 250 appearances, very good. So kudos, bhai. They are there in the league fighting for the title, or Chelsea should take a leaf out of them and Man City, because Man City इतना pressure होने के बावजूद they went away at Burnley, beat them 2-0, 5 मिनट, खाली 5 मिनट लगा केविन डे ब्रुयने को, to get back to the top of the table. और अभी वापस से 1 point lead बन गया है, because it was not only Kevin De Bruyne, Gundogan scored as well. Gundogan, now he becomes the highest ever goal scorer as a German in the Premier League. Wow, breaking Ozil's record. Talking about records as well, Laporte, highest ever points garnered in the first 100 games in the Premier League. Like really, Man City has done too much यार recent season में, इतना dominate मत करो. Good for Laporte, good for Man City, congratulations. लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर काफी Chelsea players भी है, no surprise there. But yes, trend भी है, interesting about that. But हाँ, अभी भी chance है for Liverpool, but I would say Man City लग रही है यार, वो तगड़ी टीम लग रही है away to Burnley, beating them 2-0 in the situation, absolutely fantastic. So we have covered Liverpool, Chelsea, of course, we have covered Real Madrid, and we have covered Man City and Atletico Madrid जो खेल रहे हैं midweek में. I know Liverpool का इतना difficult match नहीं होना चाहिए compared to the others, again on paper, but another match जो आप बोलोगे इतना difficult नहीं है वो है Bayern Munich का midweek में, and they were playing as well. And let's be honest, Bayern Munich अगर draw भी करती तो it would have been a huge shock, लेकिन मिला नहीं वो shock. And it is certainly Bayern Munich winning easy away at Freiburg 4-1. Till next time, take care, like कर दीजिए, hit that bell notification icon and keep the blue flag flying high.